और सफल लैंडिंग भारत को अंतरिक्ष की खोज में और भी आगे ले जाएगी। मैं इस मिशन की पूर्ण सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। For years, the Indian Space Research Organization ISRO has been taking India forward in the space race. The space agency hit a milestone with Chandrayaan-1, and now ISRO is set to make history with the Chandrayaan-2 mission. I remember when I was about 9 to 10 years old, my mother bought for me a few colorful, exciting books about the emerging technologies of computing and space travels. When I was reading about the exploits of NASA in the US, and I actually dreamt at that time of going to the US and working for NASA. Of course, that never happened, but the excitement of what NASA was doing was what motivated me to take up a career in science and engineering. How long can we depend upon foreign technology in our country? Chandrayaan-2 is an Indian lunar mission that will boldly go where no country has ever gone before, the moon's south polar region. Our biggest driver is to create benefits to society, the scientific community, and the country at large. We do not rest on past laurels. We constantly look at the future and seek new challenges in everything we do. A lot of hard work goes into conceiving, planning, and executing the program in collaboration with various industries. Chandrayaan-2 consists of an orbiter, a lander, and a rover. The orbiter will perform mapping from an altitude of 100 kilometers, while the lander will make a soft landing on the surface and send out the rover. The moon is the closest cosmic body where space discovery can be attempted and documented. Our moon is believed to have formed from the remnant of a giant impact of a Mars-sized solar system object with Earth more than 4.4 billion years ago. Evidence of the early solar system environment in Earth's vicinity is preserved on the moon. This provides ample reasons to use the moon as a nearby laboratory to look back at Earth's history. India's first mission to the moon, Chandrayaan-1, revealed important findings. The direct discovery of water on moon by Chandrayaan-1 in 2008 and further re-examination of retrieved samples for trapped water in lunar rock samples. We flew over the clouds and into the sunrise. Then Nanny took us into the future. Do you believe it? The target found. Agent, what's he wearing? Blue jeans, black jacket. Jacket looks premium, sir. Soft, cozy, durable. बंदा एकदम sexy लग रहा है, sir. Agent, focus. Price पता करो. Go. कितने मिली? क्या? Jacket. 6,000. 600? कहाँ से? मीशो से. Impossible. मीशो सीधा फैक्ट्री से भिजवाता है. It's possible. Well done, agent. Thank you, boss. सही quality, सही price. No, I am Misho. The very thin atmosphere of the moon, called the surface boundary exosphere, also showed water content from Chandrayaan-1. As the global research community continues its efforts to understand the origin and evolution of the moon, it demands new investigations and higher data quality that can validate or disprove theoretical models. Chandrayaan-2 mission is designed to provide new and unique observations to help in this scientific pursuit. Chandrayaan-2 attempts to foster a new age of discovery, increase our understanding of space, stimulate the advancement of technology, promote global alliances, and inspire a future generation of explorers and scientists. This is a very, very important program for the Indian space
research organization and as well as for the space community, which looks at India as one of the emerging countries into the space program. Moon provides the best linkage to Earth's early history. It offers an undisturbed historical record of the inner solar system environment. Though there are a few mature models, the origin of Moon still needs further explanations. In the past, people had been looking at from their naked eye the stars, galaxies, and constellations. We are actually hindered by the atmosphere of the Earth. So, if you go beyond the Earth's atmosphere, then you have a very good view of the celestial objects. As the technology started developing, man started putting satellites into orbit and putting observation instruments on those satellites to look at celestial activities. Remote sensing is the art of looking at things from a distance and deciphering or understanding the activities. It's the only mechanism through which we can do observation of celestial objects. It was one such in measure where our own Chandrayaan-1 actually carried a set of observation instruments like M-Cube or MINISAR, which helped discovering not only the presence of water molecules and OH molecules, but also the process of formation of such molecules. The instruments which can make observation in a large number of wavelength spectrum, it can actually identify the characteristics of the surface of the moon. We are now going to follow up the activities of Chandrayaan-1 with our own Chandrayaan-2, which will be enhancing what we have identified and make it more concrete, both in terms of the presence as well as distribution of water on the moon. Extensive mapping of lunar surface to study variations in lunar surface composition is essential to trace back the origin and evolution of the moon. Evidence for water molecules discovered by Chandrayaan-1 requires further studies. Space missions are complex and risky, more so for a mission to Moon and other planets. We have a track record. Chandrayaan-1 of 2008 and the Mars orbiter mission Mangalyaan of 2040. They tested our ability for precise navigation into deep space and for the tricky capture of the orbit of these celestial bodies. Chandrayaan-2 mission is more intricate. Imagine the lunar lander orbiting Moon at a speed of around 6,000 km per hour. It must have autonomous capability to brake its speed and steer itself for a soft and safe landing in an uncharted terrain of Moon, that too precisely at a designated site. And what more, all this happened within 16 minutes, and the landing site also has to be ascertained by itself while on its descent. What drives the team ISRO to such quantum leaps? It is the belief in ourselves. It is team excellence. It is the learning from the past missions, both failures and successes. It is a sublime combination of the wisdom of elders and the innovative power of younger generation. It is a preparedness for all imaginable scenarios. It is transformational leadership at all levels. The lunar South Pole is especially interesting because of the lunar surface area here that remains in shadow is much larger than that at the North Pole. Chandrayaan-2 is the next leap in technology as we attempt to soft land close to South Pole of Moon. The soft landing is extremely complex and we will experience approximately 15 minutes of terror. There is a possibility of the presence of water in permanently shadowed areas around it. Chandrayaan-2 will attempt to soft land the lander
Vikram and rover Pragyan in a high plane. First space mission to conduct a soft landing on the moon's south polar region. First Indian expedition to attempt a soft landing on the lunar surface with homegrown technology. First Indian mission to explore the lunar terrain with homegrown technology. जब कम पड़ता है बैकअप तो सारे रूम्स का बैकअप पावर चाहिए पावर ओ आया गेम मत वो आया अब घर आया आया ओ आया मास्टर शेफ आया दीदी भरता बनाओ या भाजा आया ओ आया पूरा घर आया Fourth country ever to soft land on the lunar surface. Chandrayaan-2 will be aided in achieving its mission by some of India's most advanced engineering marvels. Its integrated module, which comprises technology and software developed across the country, includes ISRO's most powerful launch vehicle to date and a wholly indigenous rover. Chandrayaan-2 is on a mission unlike any before. Leveraging nearly a decade of scientific research and engineering development, India's second lunar expedition will shed light on a completely unexplored section of the moon, its south polar region. Moon is the closest cosmic particle near the Earth. So it was always very, very interesting for human being to understand about the moon. Chandrayaan-2 is going on a particular place on the area where no country has reached. That area is south pole of the moon. Chandrayaan mission will inspire and motivate the youth of this society and the children and the student to come out of the comfort zone, think bigger, and go beyond what is already achieved. This mission will help us gain a better understanding of the origin and evolution of the moon by conducting detailed topographical studies, comprehensive mineralogical analysis, and a host of other experiments on the lunar surface. Is a 4-meter diameter class rocket with a payload capability of 4 ton to GTU. This is a rocket that is going to carry our Chandrayaan-2 to the orbit. The GSLV Mark III is signified with a very elegant architecture in which we use one of the biggest solid boosters called S200 as its strap-ons for the first stage. Then we use a liquid stage, Vikas engine-based L110, and a cryogenic upper stage, a new cryogenic upper stage with the C25 stage with a C20 20-ton thrust cryogenic engine, which is an indigenous development. It also features a payload compartment, which is 5 meters in diameter, giving almost 100 meter cube payload volume. Balancing of these two motors to provide very equal thrust in a solid motor was one of the important challenges which was addressed in the design and its processing and casting and testing of these motors. 5, 4, 3, 2, 1. India's GSLV Mark III M1 successfully launched Chandrayaan-2 from the Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, on July 22, 2019, into its planned orbit. I am extremely happy to see that ISRO is now embarking on one of the most complex missions
that is undertaken since its inception, that of launching the Chandrayaan-2, which has got an ambitious mission goal, that of putting a craft around the moon as an orbiter and then take a part of it and land it on the surface of the moon, the lander, and ultimately deploy out of this another craft that would do a little bit of roving around the vicinity of the landing and search for itself certain features of the moon, the geographic, the geological, and other aspects of the lunar surface. ISRO aims to expand India's footprint in space. Inspire a future generation of scientists, engineers, and explorers. Surpass international aspirations. Let us hear from Dr. A. Rajarajan how Chandrayaan-2 was successfully launched. Lot of things happen behind the scene for a successful launch. The integration of the launch vehicle happens over a period of 50 days. The activities are carried out 24/7, round the clock, in a highly synchronized manner, which is the hallmark of the resilience of Team ISRO. Favorable weather and wind conditions are a must for successful launch. Planning a launch requires accurate weather and wind profile modeling and prediction for the launch date. Ensuring safety at all work sites requires elaborate planning and assessment of accident risks. The liquid fuel is loaded in launch vehicle hours before the launch. Ensuring adequate supply and accurate loading requires careful monitoring of this activity. All activities before the launch till liftoff are controlled and monitored by the mission control room, which has the systems to assess the flight data from the launch vehicle. Spent stages of the rocket are separated and fall back on the earth along the ground trace. Careful analysis is done to predict the impact location of these spent stages to prevent any mishaps. Just after the lift, the flight data are received using the ground-based radars at Shah. And this is how a successful launch is executed. Let's have the app ready when I'm back. So, 3, 2, 1. After the injection of Chandrayaan-2 spacecraft, a series of maneuvers were carried out to raise its orbit and put Chandrayaan-2 on lunar transfer trajectory. On the day of landing, the lander will separate from the orbiter and then perform a series of complex maneuvers comprising of rough braking and fine braking. Imaging of the landing site region prior to landing will be done for finding safe and hazard-free. The lander Vikram will finally land near South Pole of the Moon on September 7th, 2019. Subsequently, rover will roll out and carry out experiments on lunar surface for a period of 1 lunar day, which is equal to 14 Earth days.
orbiter will continue its mission for a duration of 1 year. For understanding of the lunar composition, it is planned to identify the elements and map its distribution on the lunar surface. Orbiter, weight 2,379 kg. Electric power generation capability 1000 watt. At the time of launch, the Chandrayaan-2 orbiter will be capable of communicating with Indian Deep Space Network IDSN at Bailalu as well as the Vikram lander. The mission life of the orbiter is 1 year and it will be placed in a 100 by 100 kilometer lunar polar orbit. Lander Vikram, weight 1,471 kg. Electric power generation capability 650 watt. The lander of Chandrayaan-2 is named Vikram after Dr. Vikram A. Sarabhai, the father of the Indian space program. Vikram has the capability to communicate with IDSN at Bailalu near Bengaluru as well as with the orbiter and rover. The lander is designed to execute a soft landing on the lunar surface. Rover Pragyan, weight 27 kg. Electric power generation capability 50 watt. Chandrayaan-2's rover is a 6-wheeled robotic vehicle named Pragyan, which translates to wisdom in Sanskrit. It can travel up to 500 meters and leverages solar energy for its functioning. It can only communicate with the lander. Around 70 students from across the country will be watching Chandrayaan-2's scheduled soft landing on the moon as it happens in the early hours of Saturday. The students will watch Chandrayaan-2's moon landing live along with Prime Minister Shri Narendra Modi. Excited about the soft landing and the rover. I'm aware that it's very critical to soft land precisely on the moon surface, especially after the failure of Israel lander. It's going to be a very huge scientific knowledge mission, and for the whole of nation, it's going to be a national pride. Each one of us is going to enjoy and prove to ourselves and to all the nations around the world that ISRO is capable of achieving anything. I'm very proud to be an Indian, as India is launching on biggest and greatest mission Chandrayaan. We always see that students either want to become doctors or want to become engineers. But when things like this come up, we can see that there are other opportunities out there. It's not just doctors and engineers or other careers people choose. There's science and technology. Our country has so many resources. We have the ability to come forward by so much. It's going to be a successful mission because ISRO has been achieving marvelous feats recently. I hope that this Chandrayaan-2 is a success and that students like us can be working on Chandrayaan-3 and 4 and so many more. ISRO will continue in its endeavor to provide many such deeply explored space programs in the near future. संस्कृत जगत की हलचल। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी ज्योति कलश प्लवते। आधे घंटे में सब कुछ सरल संस्कृत में। संस्कृतस्य वर्णशास्त्रं व्याकरणशास्त्रम् एतानि सर्वाण्यपि अत्यन्तवैज्ञानिकानि। गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। वार्तावली शनिवार शाम 7 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
back in 2017, there were a lot of farmer suicides. The major problem was they were facing crop failures. In OpenVino, we integrated Kishano for de-blurring the images taken from satellites, and I came up with a solution that would detect both plant diseases along with pests in a very limited amount of time. Thanks to Intel team that actually identified the problem, they helped us in guiding how we can incorporate AI and other new technologies like OpenVino and scale our idea in a better way and have a better solution. इस वीडियो और आपके बेटे के एलिगेशंस के बारे में आप दोनों के अलावा और कौन-कौन जानता है? हम दोनों को और मिसेस बजाज को। पक्का? किसी और को नहीं? किसी को नहीं पता। ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। आप इसे साइन करेंगे और वादा करेंगे कि आप ना सिर्फ इस वीडियो को सनी के मोबाइल डिवाइस और हर सेकेंडरी डिवाइस से डिलीट करेंगे, बल्कि आज के बाद इस टॉपिक पे कभी भी किसी से कोई बात नहीं करेंगे। आप हमारा मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पागल हो गए हो आप? 10 करोड़। The sum offered only stands for the next 5 minutes, Mr. Vashish. ये घर, गाड़ी और आपका डाउन मार्केट पार्लर, उसके मेहनत की कमाई बेशर्मी से उड़ा रहे हो आप लोग। हमने जो कुछ भी किया है, वो तुम दोनों की भलाई के लिए किया है। सनी क्या हुआ बेटा? क्या कर सकते हो आप दोनों? नींद कैसे आती है आपको पापा? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। क्यों? से मेरा बेटा है। करने वाला और गुनाह को छुपाने वाला दोनों बराबर के कसूरवार होते हैं। I hate you more than I hate that man. देखिए कफस सिर्फ सोनी लिव पर। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 पर टिकी है दुनिया की नजर। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत बनेगा पहला देश। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की धरती पर देंगे दस्तक। आप भी बनिए इस ऐतिहासिक पल के गवाह हमारे साथ। चंद्रयान-2 लगातार कवरेज 7 सितंबर रात 1 बजे से सिर्फ डीडी न्यूज पर। जल संकट को हमने गंभीरता से लेना होगा। पानी बचाना है, हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इस विशेष प्रसारण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी सहयोगी नैन्सी हैं और डीडी न्यूज ही नहीं बल्कि दूरदर्शन के जो तमाम केंद्र हैं उन सब का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस वक्त तमाम केंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये ऐतिहासिक पल है चंद्रयान-2 उसकी सफलता की, जिसकी देश दुआएं कर रहा है, उसकी सफलता की कहानी जो है अपनी आंखों से देखने के लिए हम इस वक्त जगे हुए हैं। और इस वक्त दूरदर्शन के तमाम सेंटर और पूरा देश दूरदर्शन के साथ जुड़ा हुआ है और हम आपको तमाम जानकारी देंगे, बताएंगे कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। जी हाँ, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लगभग 12:30 बज चुके हैं। काउंटडाउन अब 1 घंटे का इंतजार करना है। अगले 1 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। अगले 1 घंटे में चंद्रयान-2 और उसका लैंडर जो है वो उतरेंगे, चंद्रयान चांद पर उतरेंगे और तिरंगा लहराएगा और हर भारतीय का सर जो है वो गर्व से एक बार फिर ऊंचा होगा। उस पल का इस वक्त हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नैन्सी। Absolutely, yes. You're watching a special broadcast, the continuous coverage on Chandrayaan-2. And in fact,
yes, just less under an hour left now for the soft landing of the lander Vikram to take place, and that's going to be very important. In fact, just to also give you a reminder, the entire Doordarshan network will be joining us, and we will be going across to our correspondents as well and bring you up to speed. And yes, you can also, in fact, watch the live streaming on our YouTube channel as well. We have got all the coverage for you, especially for you. We are up awake, all alert tonight, but we're in fact also making sure that you get the entire coverage and what this really means for all of us and why this is going to be so very important. In fact, to begin this broadcast, let's bring you these exclusive visuals that we have got from Chandrayaan-2. Take a look at these beautiful visuals. तो ये आपने देखा कि किस तरह से चंद्रयान की तैयारी हुई थी और कैसे चंद्रयान यहां तक पहुंचा है और अब कहां पहुंचने वाला है, हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके चांद पर जो है तिरंगा लहराने की अब पूरी तैयारी हो गई है और इस पूरी मुहिम को, इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार बरसों से काम हो रहा था और अब जबकि हम एक ऐतिहासिक पल पर हैं, आइए सुनते हैं इसरो के पूर्व अध्यक्षों ने क्या कुछ कहा है चंद्रयान-2 और इस पूरे अभियान के बारे में। I'm extremely happy to see that ISRO is now embarking on one of the most complex missions that is undertaken since its inception, that of launching the Chandrayaan-2, which has got an ambitious mission goal, that of putting a craft around the moon as an orbiter, and then take a part of it and land it on the surface of the moon, the lander, and ultimately deploy out of this another craft that would do a little bit of roving around the vicinity of the landing and search for itself certain features of the moon, the geological and other aspects of the lunar surface. But at the immediate concern is to make sure that we have a very successful mission of a launch of the Chandrayaan-2, its operations in the context of leading it to a lander on the moon, and ultimately getting some feel of the scientific basis of certain aspects of the lunar evolution and its present status by the instruments that are being flown, both the orbiter, lander, as well as on the rover. So I wish Dr. Sivan and his team the very best in this mission, and I am sure the country will certainly be proud of what ISRO is doing today in this context. Thank you. Space missions are complex. माया, तू भी खुशखबरी सुना दे। ओए, मॉम का चॉइस में प्लान करना हो तब कर। और ती कभी ना करना हो तो चुटकी की और फोटोज दिखाना। सब क्या बोलते हैं भूल जा। It has to be your choice. खुल के बात होती है जब ज्यादा प्राइवेसी मिलती है।
gives you wings. Complex and risky, more so for a mission to Moon and other planets. We have a track record. Chandrayaan-1 of 2008 and the Mars orbiter mission Mangalyaan of 2040. They tested our ability for precise navigation into deep space and for the tricky capture of the orbit of these celestial bodies. Chandrayaan-2 mission is more intricate. Imagine the lunar lander orbiting Moon at a speed of around 6,000 km per hour. It must have autonomous capability to break its speed and steer itself for a soft and safe landing in an uncharted terrain of Moon, that too precisely at a designated site. And what more, all this happened within 16 minutes, and the landing site also has to be ascertained by itself while on its descent. What drives the team ISRO to such quantum leaps? It is the belief in ourselves. It is team excellence. It is the learning from the past missions, both failures and successes. It is a sublime combination of the wisdom of elders and the innovative power of younger generation. It is a preparedness for all imaginable scenarios. It is transformational leadership at all levels. Chandrayaan-2 with an Indian lander rover combined is India's first step in robotic space exploration. In the past, people had been looking at from their naked eye the stars, galaxies, and constellations. We are actually hindered by the atmosphere of the Earth. So if you go beyond the Earth's atmosphere, then you have a very good view of the celestial objects. As the technology started developing, man started putting satellites into orbit and putting observation instruments on those satellites to look at celestial activities. Remote sensing is the art of looking at things from a distance and deciphering or understanding the activities. It's the only mechanism through which we can do observation of celestial objects. It was one such in measure where our own Chandrayaan-1 actually carried a set of observation instruments like M-Cubed or MINISAR, which helped discovering not only the presence of water molecules and OH molecules, but also the process of formation of such molecules. The instruments which can make observation in a large number of wavelength spectrum, it can actually identify the characteristics of the surface of the moon. We are now going to follow up the activities of Chandrayaan-1 with our own Chandrayaan-2, which will be enhancing what we have identified and make it more concrete, both in terms of the presence as well as distribution of water on the moon. तो इस वक्त आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अब सिर्फ कुछ घंटे, 1 घंटा भी बाकी नहीं है, कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम इस काउंटडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इसके क्या मायने हैं। और हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नैंसी। Yes, absolutely. Let's introduce our guest to you. We have Dr. Ajay Lele. He's a senior fellow at the IDSA. Thanks, sir, for joining us here on Doordarshan News for this special broadcast that, in fact, is taking place in front of all of us. And also, Mr. Vijay Kranti. He is, of course, there at Doordarshan News. Thanks very much, Mr. Kranti, for joining us here. Let me begin by taking your first reactions. Dr. Lele, if I can begin with you. It's a very important night for all of us, a moment of pride for all us Indians. What's your feeling tonight? Of course, and it's going to be marking a paradigm shift when we talk about
It's going to be marking a paradigm shift when we talk about this great feat, because this is not going to be inspiring future generations, but in fact also surpassing international aspirations and also expanding India's footprint in space. Definitely, if you trace back the entire history of ISRO and all the missions which have been carried out by ISRO for all these years, I think this is going to be one of the most complicated mission, the complicated task which they have taken so far. Because today we are entering into the arena of a deep space. When we call that arena of a deep space, that means you are traveling a distance which is more than minimum 1 lakh kilometers. The moon is around 3,84,000 kilometers away from the Earth's surface. And what we are going to attempt is to land a lander onto the surface of the moon, and then after a couple of hours, a rover is going to come out of that lander and it will start moving onto the surface of the moon and start collecting observations. So to carry out a mission at such a larger distance, totally autonomously, is definitely a challenging task. And I think India has not done it before, but the way entire mission Chandrayaan-2 has progressed from 22nd July onwards, it gives you a total amount of a hope and surety that this mission also is going to succeed. Because to my mind at least, ISRO has not left any stone unturned, and they have taken all precautions. They have learned from previous experiences, because if you look at the statistics, only 37 to 38% of such missions have become successful. Yes. Recently, there was a failure with an Israeli mission. Absolutely. ISRO has picked up some information from that failure also and have corrected something in their own mission too. So from all these perspectives, we are looking forward for a very successful landing of a rover, lander, and subsequently the movement of a rover on moon surface. Sure, okay. जी, जैसा आपने कहा कि जाहिर सी बात है, ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इतनी बड़ी चुनौती जो है, पहली बार भारत ने स्पेस में जो है इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार की है। तो विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे थे, एक जमाना वो भी था जब हम तस्वीरें देखा करते थे कि भारत की जो रॉकेट्स हैं, वो कभी साइकिल पे ले जाने का दौर था कि साइकिल पर रखकर एक व्यक्ति ले जा रहे हैं इसरो के। उसके बाद बैलगाड़ी पर भी हमने देखा। आज हम चांद पर पहुंचने जा रहे हैं, तिरंगा वहां तक पहुंचने जा रहे हैं। ये जो पूरी यात्रा है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस यात्रा का जैसे आपने वर्णन किया कि हम साइकिल से शुरू हुए, फिर बैलगाड़ी से होते हुए, और अब क्रेन्स और सारे नए सिस्टम के साथ हमारे जो अब हम चांद पर उतरने जा रहे हैं, ये जो यात्रा है, इसकी जो सबसे बड़ी बात और जिस पर गर्व करना चाहिए वो ये कि ये सब कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने अपने ही बूते पर हासिल किया है। जब हम कहते हैं अपने ही बूते पर, तो उसमें न सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, बल्कि उसके साथ जो साइंस विज्ञान की जानकारी है, थ्योरी है, वो सब उन्होंने अब, क्योंकि भारत के साथ एक बड़ा ये दुर्भाग्य रहा कि वो अलग अलग जो कारण रहे पिछले 60-70 साल में, और वो ज़्यादातर राजनीतिक कारण थे कि भारत एक ऐसे कॉर्नर में खड़ा कर दिया गया था कि जहां दुनिया के वो सारे देश जो भले स्पेस का फील्ड हो, भले एटॉमिक एनर्जी का फील्ड हो, या विज्ञान के दूसरे जो एडवांस्ड जो डिसिप्लिन है उनका हो, उन सब देशों ने भारत को एक तरह से अछूत बनाकर रखा हुआ था। और जितने भी जानकारी है जो चाहिए आज विज्ञान के लिए, आज जो हम जैसे चांद पर पहुंचे हैं या एटॉमिक एनर्जी में हमने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उनमें से कुछ भी भारत के वैज्ञानिकों को हासिल नहीं था। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे कंप्यूटर या छोटे इक्विपमेंट जो अदरवाइज वो देश आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं, एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, उन तक भारत के वैज्ञानिकों की पहुंच नहीं थी। सबसे बड़े गर्व की बात है कि उस सारे छुआछूत के बावजूद भारत के वैज्ञानिकों ने वो हर चीज अपने बूते पर हासिल की है, जिसको अगर हम कहें कि री इन्वेंटिंग द व्हील, कि उस विज्ञान, पूरे जो विज्ञान है, इनमें हर क्षेत्र में जीरो से शुरू करके आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां हम अपने वैज्ञानिकों पर गर्व कर सकते हैं। भारत को इस पर गर्व है कि हम आज उस जगह पर हैं जहां दूसरे हमें ईर्ष्या से देखने लगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और नैन्सी, बड़े ये सहयोग की बात है और अच्छा सहयोग है। इस वक्त हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं और चंद्रयान की सफलता की दुआएं मांग रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान हैं, एक अजय हैं,
एक विजय हैं। तो यानी विजयी होना चाहिए, अजय रहना चाहिए, और ये पूरा जो हमारा मिशन है भारत का, हिंदुस्तान का, ये विजयी हो और हम अजय बने रहे दुनिया में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। इसकी दुआएं जो है लगातार देश मांग रहा है। और इस वक्त सीधा हम चलते हैं हमारे संवाददाता इस वक्त आशुतोष के पास, लखनऊ में मौजूद है हमारे संवाददाता आशुतोष। आशुतोष, लखनऊ की भी आंखों में नींद अभी है या फिर नींद उड़ी हुई है और सिर्फ इंतजार हो रहा है इस वक्त उस पल का जिसका पूरा देश नहीं शायद दुनिया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही होगी? क्या कहेंगे आप? अशोक, अभूतपूर्व पल हैं। सपने देखने के लिए नींद की जरूरत होती है, लेकिन आज सपनों के साकार होने के लिए नींद उड़ी हुई है। जो चंद्रमा हमारे जीवन में हर रूप से विद्यमान है, हमारे साहित्य में विद्यमान है, हमारे व्रत त्योहारों में विद्यमान है, जिसकी छाप हमारे हर जीवन के अंग पर है, आज उस चंद्रमा पर हमारी छाप पड़ने जा रही है, हमारे इसरो की छाप पड़ने जा रही है, हमारे भारत की छाप पड़ने जा रही है। निश्चित रूप से लखनऊ वासी जो है, जो किसी वजह से सो गए हैं, वह इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी आंखें खुलें तो वो एक साकार होते हुए सपने को अखबार में पढ़ने के लिए या टीवी पर देखने के लिए, और जो जग रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि वो पल कब आएगा, कि कब हमारी चंद्रमा पर छाप पड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त नक्षत्र वेधशाला के यहाँ पर सुमित श्रीवास्तव जी हैं। किस तरह से आप इंतजार कर रहे हैं? तमाम नक्षत्रों को देखते रहे सौर मंडल में, इस नक्षत्रशाला में। अभी आज जब चांद पर जब भारत का यान उतर रहा है तो किस तरह से देखते हैं? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में हम लोग लगातार चंद्रमा को एक मेन ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते रहे हैं। चंद्रमा के क्रेटर्स, चंद्रमा के पहाड़, मारियाज हमारे लिए हमेशा उत्सुकता का विषय रहे हैं। और जब चंद्रयान आज वहाँ पे, चंद्रयान से विक्रम ऑर्बिट लैंडर वहाँ पे लैंड करेगा, तो ये हमारे लिए एक अभूतपूर्व क्षण है। इसके लिए हमारे यूपीएमएचओ एस्ट्रोनॉमर्स क्लब यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और हम लोग जो इसरो से सीधे जो विक्रम लैंडर के लैंड करने की जो तस्वीरें हैं, लाइव स्ट्रीमिंग है, वो भी हम अपने प्रोजेक्टर पे कर रहे हैं। बिल्कुल अशोक, आपको मैं बता दूं, जो कौतुक है जिसकी आपने बात की, जिस कौतुक की बात की, जो कौतुक हमारी कहानियों, कविताओं और हमारे तमाम सारे जीवन के अंगों में रहा, वह कौतुक आज भी विद्यमान है, लखनऊ के लोगों में विद्यमान है। वो देखना चाहते हैं कि हमारी जो वैज्ञानिकों की सफलता है वह किस तरह से साकार हो रही है, उन्हें उस पल का इंतजार है। जी नैंसी। Yes, absolutely, Ashutosh. In fact, we would like to also, learn from you, because we were speaking earlier with the correspondents, and they showed us how special screenings and monitoring has been organized for everyone across the state. What's it like there in the capital of Uttar Pradesh, Lucknow? Has any special screening been organized? People gathering there, staying up awake, and being a witness to this historic moment. बिल्कुल नैन्सी, जिस तरह से ये हम जिस वक्त जहाँ पर खड़े हैं, ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, और यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, जो अंदर भी बैठे हुए हैं। हमारे दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर भी जो है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। चंद्रयान किस तरह से धरती पर, सतह पर चंद्रमा की उतरेगा, इस चीज को दिखाने की तैयारी की गई है। इसके अलावा चूंकि घर घर में इस चीज की व्यवस्था है कि वो देख सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि लोग एक साथ गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नक्षत्रशाला है जहाँ पर बैठ के लोग देखना चाहते हैं, एक दूसरे से इस खुशी के अवसर पर अपनी खुशी को बांटना चाहते हैं, निश्चित रूप से वहां पर लोग इकट्ठा हैं। छोटी छोटी संख्या में राजधानी में कई जगहों पर इस तरह के इंतजाम है जहां पर लोग जो है इस अभूतपूर्व पल का इंतजार कर रहे हैं। जी नैंसी। ओके, all right, Ashutosh, requested to please continue being with us. In fact, let's also tell you that Prime Minister Modi is going to be witnessing this historic moon landing. In fact, he reached Bengaluru earlier on, and he will be there. There you have those shots, and this is just a day after he, in fact, arrived back in the country after concluding the very successful visit to Russia in Vladivostok, of course. And this was when Prime Minister Modi landed in Bengaluru earlier. Remember, he's going to be witnessing the historic moon landing at the ISRO headquarters in Bengaluru, along with 60 students who have been selected via a quiz, and they will all be present there at the ISRO Center. Remember, Prime Minister Modi has been keeping a breathtaking pace of activities, engagements, and meetings. The Prime Minister, after attending the Far East Economic Forum in Vladivostok, Russia, landed back in the national capital early this morning in the wee hours, and without losing any time, he then actively engaged in various matters of national importance during the course of the day. He then flew to Bengaluru to personally witness this glorious day in India's journey into space when the Vikram lander reaches moon surface and then the Pragyan rover rolls out. Well, of course, that takes place later on, but what you're seeing are the
visuals on your screen of Prime Minister Modi, who reached the Bengaluru airport, and he is, of course, being received by the Chief Minister. He will be personally witnessing this historic moment and the historic moon landing at the ISRO headquarters in Bengaluru. Okay, let's Yeah. continue our discussion with our guests, and let me go across to Mr. Kranti now. Mr. Kranti, we've been talking about how why Chandrayaan-2 is so very important, but talking about the study of the moon as well, because this is an advanced version of Chandrayaan-1 Yeah. that was launched in 2008. It's almost 11 years from then that Chandrayaan-2 that was of course launched on 22nd July this year, and today it's another milestone in Chandrayaan-2 because that's when the lander, the Vikram, is going to be separated from the orbiter and will be making a soft landing on the south pole of the moon. We have spoken at length about why south pole of the moon is so significant and relevant, but in particular as well, why the study of the moon and the south pole as well is going to be so very important and going to be opening a new box of knowledge, not just for India but for the entire human species. Mr. Kranti. Yeah, one reason is that South Pole is unique in the sense that because of the geography of moon and its exposure to sun, the South Pole is the area where it is getting minimum of sunlight. Absolutely. Which means that, for example, the equator of moon is going through regularly extreme changes in temperature because of its exposure to sun. And then when sun is not there, then the total difference of temperatures between these two extremes is, I think, far beyond more than 270 degrees Celsius, which means it is undergoing extremes. So the possibility of compounds like water in that region is very low. Whereas the south... So also tracing the history of our planet and the entire solar system. Yeah. I'm coming to that point. Yes, The very first thing which is right now, the entire scientific community of the world is excited, is about the possibility of confirmation by Chandrayaan-2 that water exists on moon. And as I said, because of the geographic location of this region, South Pole, there is great possibility because it's a very, very cold region. And for millions or billions of years, this has not been exposed to high temperatures. So there is possibility that the water, most of the water possibility of existence on moon should be in this area. All right, Mr. Gandhi, we'll one. continue understanding. There's a lot to understand, and in fact, we want to make this very simpler for our audience. But for now, let's go across to our colleague Arun Sharma, who is standing by, and he will explain to us those critical 15 minutes, why that is going to be so very important, and what happens inside Vikram, the lander, when it soft lands on the south pole of the moon. What happens inside, what takes place inside Vikram, the lander, all the technicalities. Arun, it's over to you. शुक्रिया अशोक जी और शुक्रिया नैन्सी। और सबसे बड़ी बात आज का अगर हम देखें कि जो मैन ऑफ द मैच अगर कोई निकल करके आएगा तो जाहिर सी बात है वो लैंडर होने वाला है, क्योंकि लैंडर अपने अंदर प्रज्ञान को लिए आगे जा रहा है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर लैंडर के जो 15 मिनट जो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं वो आखिरकार क्रिटिकल क्यों है। हम आज लैंडर को ही डाइसेक्ट करके देखते हैं कि आखिर लैंडर में क्या कुछ है जिसकी वजह से लैंडर इस चैलेंज को पार करने में काफी ज्यादा सक्षम होने वाला है। इस बात को हमें समझना होगा। मैं आपको इस समय पर बता दूं कि लैंडर के अंदर जिस तरह से हम जो हाई डेफिनेशन हाई रेजोल्यूशन कैमरास की बात कर रहे हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट एक तरह से निकल करके आ सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से हम लैंडर की बात कर रहे हैं तो लैंडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क यही होगा कि किस तरह से स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इस समय अगर हम देखें लैंडर अगर मान के चल 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर चांद की सतह से है तो यह समझना जरूरी है कि अगर वो 1300 से 1400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है तो जो उसमें जो लिक्विड इंजन लगा हुआ है जिसको हम थ्रस्टर भी कहते हैं वो किस तरह से काम करने वाले हैं, इस बात पर भी हम फोकस कर लेते हैं। तो ये तमाम चीजें मैं आपको बता दूं इस समय पर। ये देखिए ये जो लैंडर पोजिशनिंग जो कैमरा है इसका प्राइमरी काम होगा कि उस पोजीशंस को देखना कि जहां पर
एक तरह से लैंडर लैंड करने वाला है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे निकल करके आती है जो के वेलोसिटी को चेक करेगा, यानी कि जो LHVC है वो इस लैंडर की वेलोसिटी को ट्रैक करेगा कि वेलोसिटी कितनी है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे चंद्रयान मिशन की अगर मैं बात करूं तो, एक इसका जो ऑल्टीट्यूड और दूसरा इसकी वेलोसिटी। तो जो के बैंड ऑल्टीमीटर 2 इसमें लगा हुआ है और साथ ही साथ के ऑल्टीमीटर 1 ये लगा हुआ है। इन दोनों का काम ये होगा कि ये ऑल्टीट्यूड को एक तरह से मेजर करेंगे कि कितना ऑल्टीट्यूड है, क्योंकि ग्रेजुअली जो लैंडर है वो धीरे धीरे वो चांद की सतह पर जाएगा, तो ऑल्टीट्यूड की मेजरिंग होगी, रीडिंग होगी, वो इस ऑल्टीमीटर के माध्यम से होती चली जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो लासा का जो लेजर ऑल्टीमीटर लगा, इसका भी काम वही होगा कि किस तरह से जो ऑल्टीट्यूड है उसकी जो नोटिंग हो सके और साथ साथ जो ऑल्टीट्यूड्स है यानी कि चांद की सतह से कितनी ऊंचाई पर है उसको ये मेजर कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर है चांद की सतह पर, वो है ये इंजन, लिक्विड इंजन, यानी कि इसके 4 थ्रस्टर है और एक सेंट्रल इंजन है। इसका काम होगा रिटार्डेशन प्रोवाइड करना, यानी कि स्पीड को कम करना, ये उसका काम होगा। टचडाउन सेंसर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये सेंसर जब लैंडर लैंड करेगा तभी आगे की प्रक्रिया किस तरह से हो, ये सेंसर्स उसको एक तरह से फोकस करते हुए दिखाई देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ये जो हम लैंडर की बात करें इसमें सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल या लैंडर पर माउंटेड है और जिससे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा वो इस लैंडर उसको उपयोग करने वाला है। एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है इस लैंडर की अगर हम बात करें, वो इसका एक और कैमरा, यानी कि कोई भी हर्डल्स ना आए, वो हर्डल्स ना आए इस को लेकर के यहाँ पे एक और कैमरा लगाया गया है, जो हैजार्डस कैमरा की जो हम बात करते हैं कि जो LHDC इसका नाम दिया गया, लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा। अगर कोई लैंडिंग साइट पे अगर कोई क्लीन साइट नहीं है तो वो उसको डिटेक्ट करने वाला है। लेकिन इस समय मैं बता दूं कि लैंडर इस समय पर लगभग 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस समय पर है और जो मेन काम होने वाला है 1:38 पर जो रफ ब्रेकिंग की शुरुआत होने वाली है। जिस तरह से लैंडर जिस स्पीड से बढ़ रहा है, तो यहाँ इंजन की देखिए, यहाँ ये जो 4 थ्रस्टर्स है इसको खोल दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होती है। 1300 किलोमीटर से देखेंगे जो 1:48 यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत होगी और जो 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो लैंडर था वो 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग यहाँ पर रह जाएगा। ये 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा तक फाइन लैंडिंग की बात करें। 1:50 पर लोकल नेविगेशन शुरू कर देगा लैंडर, यानी कि अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, साथ ही साथ जो नेविगेट करने की पूरी कोशिश करेगा, यानी कि आप ये देखिए इस तरह से नेविगेट करेगा, यानी कि इसमें जो कैमरास लगे हैं इसमें कोशिश करेगा देखने की कि कहां पर वो लैंडिंग साइट्स हो सकती है जहां पर हम लैंड कर सकते हैं। जिस लैंडिंग साइट पर हम लैंड करने जा रहे हैं वो कितनी सेफ है, वहां पे कोई रॉक्स या पत्थर या कोई हर्डल तो नहीं है, साइट सीधी ही है कि नहीं है, ये तमाम चीजें यहाँ पे लैंडिंग साइट में हम देखते नजर आएंगे। और ये देखिए होवरिंग साइट है, यानी कि आप केवल 2 ही इंजन के थ्रस्टर्स यहाँ पे चल रहे हैं और धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे हम लोग समय अगर 15 मिनट की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे काम है केवल स्पीड को कंट्रोल करना है। देखिए ये स्पीड को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये जो थ्रस्टर्स लगे हुए हैं ये स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और चांद की जो ग्रेविटी वो नीचे की तरफ खींच रही है। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि महज केवल 10 मीटर की जब ऊंचाई रह जाएगी उस समय पर जो सेंट्रल प्रोपल्शन है, सेंट्रल इंजन है, वो यहां पे शुरू हो जाएगा, जिसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है जो कि सेंट्रल इंजन के ऑन होने के बाद में विक्रम का टचडाउन हो जाएगा 1:53 PM के अगर बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है जो कि लैंडर की जब ये टचडाउन करेगा। लेकिन आगे जो 15 मिनट की जो टेरर की बात चल रही है ये वही टेरर के पॉइंट होंगे। लेकिन ये लैंडर में देखिए जिस तरह से हाईटेक जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, कैमरास की बात कर लीजिए, ऑल्टीमीटर्स की बात कर लीजिए, वो इस लैंडर को सक्षम बनाते हैं आगे जाने की दिशा के अंदर। 5:19 पर देखिए फाइनली जब प्रज्ञान रोवर है वो यहां से रोल डाउन होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार जब 5:29 पर होगा तो जो हम तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं तो इस पैनल में अजय और विजय तो है लेकिन अशोक भी है, तो अशोक स्तंभ का मार्क यहां पर होगा चांद की सतह पर और वो शायद हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह जाएगा इस अगर हम इस बात करें इस चांद की सतह पर। तो ये तो था लैंडर की कुछ खास बातें, लेकिन बाकी की बातों के लिए चलते हैं सीधे अशोक जी और नैन्सी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपने जिस खूबी के साथ बताया उसके बाद मुझे लगता है कि हर किसी को जो विज्ञान को समझता है, विज्ञान को नहीं समझता, हर किसी के लिए प्रोसेस जो है बिल्कुल सरल हो गया और हमने आपको दिखाया किस तरह से एनिमेशन के जरिए क्या कुछ होगा, यानी जो कुछ होने वाला है वो हमने आपको अभी दिखा दिया। तो इंतजार है उस पल का, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो तमाम जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों का अरुण ने जिक्र किया और अजय जी ये पूरी प्रोसेस तो हमने समझ लिया। इसमें एक बात ये भी है कि जो चुनौतियां हैं वो भी इसमें पूरी तरह से समझ में आ गई, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मशीन से, टेक्नोलॉजी से क्या कुछ इंतजाम किए हैं वो समझ में आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता है क्या चुनौतियां होंगी अहम इन 15 मिनट में?
सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हम इसको भले ही सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, लेकिन ये सबसे हार्डेस्ट चीज़ है जो इस मिशन का अंग है। तो सबसे हार्डेस्ट इसलिए है क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है उसको आपको बखूबी से कंट्रोल करना है। 2 किलोमीटर पर सेकंड से वेलोसिटी आपको 2 मीटर्स पर सेकंड तक लानी है और फाइनली आप जब लैंड करेंगे तब ऑलमोस्ट ज़ीरो वेलोसिटी लग के लैंड करेंगे। अब लैंडर ने ये किया है, ऑर्बिटर के साथ उसका संबंध रहता है, ऑर्बिटर के साथ उसके कम्युनिकेशंस हैं, ऑर्बिटर फोटोग्राफ्स ले रहा है, लैंडर जैसे जैसे नीचे आएगा। All right, Dr. Lele, we'll come back to you. We are really sorry, but we have to, in fact, cut across live now to Bengaluru, the ISRO headquarters. There, in fact, Prime Minister Modi is going to be arriving there shortly, and of course, we'll be witnessing the historic moon landing. Three, two, one. नमस्कार। 7 सितंबर 2019 आज की रात मुलाकात चांद के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक और सभी अंतरिक्ष प्रेमी लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। Welcome to the coverage of soft landing of Chandrayaan-2 on lunar surface. These are the visuals from Mission Operations Complex at ISRO Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, based out of the garden city of Bengaluru, Karnataka. These display screens are showing the countdown. Also the path that lander Vikram will take as we are moments away to see that touchdown happening. Chandrayaan-2 is an Indian lunar mission that aims to improve our understanding of our closest neighbor, the moon. Discoveries that perhaps will contribute to national development and also serve humanity as a whole. These young students जब कम पड़ता है बैकअप तो सारे रूम्स का बैकअप पावर चाहिए पावर। आया ओ आया गेमर बॉय आया आया ओ आया ब्यूटी पार्लर आया आया ओ आया पूरा घर आया आया ओ आया मास्टर शेफ आया दीदी भरता बनाओ या भाजा आया ओ आया पूरा घर आया। भाभी बैकअप नहीं है पावरफुल, इसीलिए आप करूं हाउसफुल। इसलिए घर ले आइए ओकाया बैटरीज विद XBD टेक्नोलॉजी जो दे बैकअप का एक्स्ट्रा टाइम। ओकाया का वादा दे बैकअप ज्यादा। have participated in the space quiz and they are here to witness the historic event. At ISRO, as the boundaries of India's capabilities in space continue to expand, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, encourages exploration of space potential and also application of space technologies to help ease of living. Prime Minister, in his Mann Ki Baat address, had invited students to participate in space quiz. His appeal had got an overwhelming response, and today, apart from the scientists and other stakeholders, we have students not only of India, but also of Bhutan to witness the soft landing of Chandrayaan-2 on the south polar region of the moon. So what makes Chandrayaan-2 special?
This is the first space mission to conduct a soft landing on the moon's south polar region. The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all kinds of complex data. India is at the brink of creating history. Are you ready to witness history tonight? It all A very good morning and welcome from the Mission Operation Complex of Telemetry Tracking and Command Network, an unit of Indian Space Research Organization, ISRO, located in Bangalore in the southern part of India. My name is Radhakrishnan and I'm with Dr. Alok, who will be bringing to you the live coverage of the Chandrayaan-2 mission in English and Hindi. Today, we are all awaiting anxiously to witness the final phase of critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-2, wherein Indian lunar lander named Vikram will be making the soft landing on the surface of the moon. We are approximately 28 minutes away from this important event. For the viewers, just a quick update on the Chandrayaan-2 mission. Chandrayaan-2 spacecraft is a composite unit consisting of 3 independent modules, named an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Chandrayaan, which is housed inside the lander unit. At the time of launch, all these 3 modules are held together as a single spacecraft called Chandrayaan-2, and the total mass of Chandrayaan-2 at launch was 3,850 kilograms. As you are all aware, launch of Chandrayaan-2 spacecraft took place on 22nd of July on board India's heaviest GSLV Mark III launcher from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. The launcher has successfully placed Chandrayaan-2 into an elliptical transfer orbit around the Earth. Subsequently, Chandrayaan-2 composite module raised its orbit around the Earth by using its rocket propulsion system in preparation to move from the earthbound phase to the lunar transfer phase. Now, if you look at the overall sequence that has happened since the Chandrayaan-2 was inserted into the orbit, the Chandrayaan-2 spacecraft was eventually captured into an orbit around the moon, and later it performed almost 4 lunar-bound maneuvers and lowered its orbit to almost 100 kilometers around the Earth. You may be aware, on 2nd of September, which was 5 days ago from where we are today, the orbiter and the lander module were separated from each other. And the very next day, after the orbiter and lander module got separated, and the lander Vikram module performed 2 deboost operations just to move the orbit from an orbit of 100 by 100 kilometers to an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers around the moon. So as on date, where we are almost 26 minutes away from the launch, and the orbiter module is rotating at an orbit of around 100 kilometers around the moon, and we have the Vikram lander module, which is moving in an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers. And since the launch of Chandrayaan-2 on 22nd July, today is the 40th day when landing is expected to take place. So right now we are around 26 minutes away from